preserving wealth is much more difficult than creating wealth. Right? You've seen the third generation curse जो आती है, right? कि फर्स्ट मेहनत करती है, सेकंड मेंटेन करते हैं, and then look, we humans can justify, rationalize any nonsense we want. This is the reality. मेरे लेट फादर हमेशा कहते थे नया जूता पहनो तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहनने वाले को पता है कहाँ चुभता है. So concept of death is the best thing we have in life. बल्कि मज़हब भी ये कहता है, करेक्ट, कि दिन में आपको मौत के बारे में मल्टीपल टाइम सोचना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. ये जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न डे कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. हैप्पीनेस इज शॉर्ट टर्म. इट्स नॉट इवन, आई मीन इफ़ यू रीड हिस्ट्री में ये हैप्पीनेस का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. पैसा ज़रूरी है. इस्लाम भी क्रिएशन ऑफ वेल्थ इनकरेज करता है. अ बिलवड प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, was a business person, right? लेकिन how he spent the wealth, yes, how he fulfilled his purpose in life, that is much more important. We don't want to become the best in the world. Forget about it. मैं कहता हूँ हम सिर्फ एवरेज पर आ जाएं, ग्लोबल एवरेज, यहाँ से यहाँ आ जाए, we are good enough. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू DigiTales. मेरा नाम फैज़ान सैयद है, फाउंडर एंड CEO ऑफ ईस्ट रिवर, और आज मेरे साथ एक बहुत रिनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, लेकिन जो काम इन्होंने हमारे माशरे के लिए किया है ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स हैज़ चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड लाइव्स. ये रह चुके हैं प्रेसिडेंट नाउ PDP के, ये रह चुके हैं करंटली प्रेसिडेंट सेंटर फॉर कंपैशन के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बोर्ड, एंड आईसेक के बोर्ड चेयरमैन हैं. हाशवानी ग्रुप में इनका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है. अमीन हाशवानी साहब, हाउ आर यू टुडे? I'm all right, thank you. सो सबसे पहले तो यू टेकन योर लाइफ इंडस्ट्रियलिस्ट, फैमिली बिजनेस, बिन अराउंड फॉर ओवर 100 years, लेकिन यू हैव चोजन टू स्पेंड योर टाइम गिविंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है या इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ होती हैं या बिज़नेस फैमिलीज़ होती हैं, टिपिकली वो फैमिलीज़ बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहती हैं. लेकिन you have actually taken a big chunk of your time and given back to society. How did that decision making take place for you? Actually, it wasn't very difficult. इतना मुश्किल नहीं था. In my family, you know, giving back in my greater community, giving back not just to the communities but around, but just humanity. बहुत emphasis रहा है हमारे family में दो चीज़ें. एक था humanity पर giving back, and the other one was emphasis on spirituality. So these two resonated very well with me. And being in a business family, you always have to sing for your supper. You always have to justify, right? बाप पूछेगा भाई ये क्या आपने क्या करा है. अच्छा, मैं समझा मिल जाता है. No, you have to sing for it. So I'll tell you, preserving wealth is much more difficult than creating wealth. Right? You've seen the third generation curse जो आती है, right? कि फर्स्ट मेहनत करती है, सेकंड मेंटेन करते हैं, and then गया. Because if you lose that value system, right, you will lose a wealth. So what generation are you in the business? Third, fourth generation. Actually, you've crossed the third. Yeah, thank God. So far, I don't know. Fingers crossed. तो ये क्यों होता है? ये जो बात बड़ी आपने important बात की, जो first generation builds, second grows, and the third destroys. Right. Because फर्स्ट जनरेशन तो मेहनत करती है, राइट? रैग्स टू रिचेस स्टोरी होती है. तो जो सेकंड जनरेशन है वो अपने बाप को देखती है कि भाई उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो उसमें कदर होती है, वैल्यू होती है कि भाई पैसे की, काम करने की, मेहनत में एक ईथॉस होता है, राइट? देन जो थर्ड जनरेशन आती है वो ये होता है कि जो जनरेशन जिन्होंने स्ट्रगल की होती है वो कहते हैं यार हम अब जो हम नहीं कर सके बच्चे करें. उसमें देन यू गो के अयाशियाँ चल रही है, ये वे इजी मनी आ रहा है, तो उसमें जो फायर इन द बेली होता है ना वो ख़त्म हो जाती है. इट्स लाइक आप शेर को आप चिड़ियाघर में डाल दो एंड देन उसको आप 5 साल के बाद जंगल में छोड़ो तो वाइल्ड वुल्व्स विल ईट इट अप, right? It loses its instinct. So it is very important. You see, let's say Jewish families, for example, right? उसमें generational लोग कहते हैं हम VC तो कंजूस है, ये वे nonsense. They retain the value thing. Even
communities like Chinyoti communities, Memon community, you'll find that the wealth does continue because वो एक inculcate करते हैं certain values, and it is not कि कंजूस है या सिर्फ greedy है. It's about preserving wealth and continuing that. उसमें certain value systems आपको चाहिए. क्या values होती हैं important preserve करने में wealth? देखिए, एक होती है कि ऑफ कोर्स आप जब आप फिजूल खर्ची जब आप करते हैं ना, तो आपका यू कैन अफोर्ड, आपने करोड़ रुपए आपने उड़ा दिए, यू कैन अफोर्ड दैट, राइट. पर जब वो करोड़ रुपए जब आप उड़ाते हैं, आपकी एक जजमेंट होती है ना, दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग इन योर बिजनेस डिसीजंस ऑल्सो. यू बिकम केयरलेस. जब आपकी वैल्यू नहीं रहती है कि भाई you have to sweat your capital. बिजनेस में होता है कि you sweat your capital, each and every penny has to count, right? So वहाँ डिस्टिंक्शन आनी चाहिए. जब तो अगर आप उड़ाना शुरू करते हैं बिजनेस डिसीजन में, it will come through for sure. You start being careless, you चले हो गया, नुकसान हो गया, आपकी मेहनत ख़त्म हो जाती है. Like I said, fire in the belly. अगर आपकी ख़त्म होती है, देखिए, there is no substitute for hard work. This right. You know very well, right? And ये Gen Z's के साथ भी मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. देखिए, बाहर जो है, I mean, I see, मेरे nephews, nieces, बाहर जो काम करते हैं ना, be it they working at McKinsey's and law firms, पहले 2 साल तो रगड़ा लगता है. आप हार्वर्ड से निकले, आप कैम्ब्रिज से निकले, आप जहाँ से भी निकले, 2 साल ऐसे ही. And I still remember my niece telling me कि रात के 12 बजे तक वो पार्टनर्स होते थे कंपनी में, वो मीटिंग ख़त्म करते थे, एंड दे वुड शो अप एट 7 in the morning. ओके, एंड एट 7 in the morning दे एक्सपेक्टेड उनके सारे मिनट्स सब कुछ टेबल पे होने चाहिए. सो शी सेड दैट वी वर ओनली अलाउड, शी वाज इन वर्किंग इन लंदन, वी वर ओनली अलाउड टू गो टू अ अपार्टमेंट, शावर करके टैक्सी नीचे खड़ी रहती थी, एंड वी हैड टू कम बैक, राइट. सो 2 साल रगड़ा लग के देन यू स्टार्ट गोइंग द लाइटर, ताकि आपके अंदर एक ग्रिट आती है आपके, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट. लॉट ऑफ जेंजीज आई फाइंड कि अब हो गया सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट. हम बहुत हेडफोन्स लगाए, लैपटॉप पे चले टक टक टक, एंड मल्टीटास्किंग चल रही है, सोशल मीडिया चल रहा है, सेल्फीज चल रही है. वो आप कर सकते हैं व्हेन यू कहते हैं ना, डिजर्व देन डिज़ायर. लेकिन उनकी व्यू में ये होता है कि उनकी का नॉट दैट वी कैन जनरलाइज, इट्स फाइन, बट उनकी व्यू में ये होता है कि देयर टू थिंग्स दे डूइंग इट फॉर. नंबर 1, आजकल मोनेटाइजेशन, आप यहाँ बैठ के आई कैन जस्ट डू दिस एंड आई एम मोनेटाइजिंग इट एंड आई एम मेकिंग मनी, नो प्रॉब्लम. तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो मैं इन्फ्लुएंसर बन गया, मुझे 5,000 10,000 50,000 जो भी मुझे मिल रहे हैं फॉर जस्ट पुटिंग अप अ पोस्ट और अ वीडियो. दूसरी चीज़ होती है कि आई एम बिल्डिंग ए फॉलोअर बेस. आज शायद मोनेटाइज नहीं हो, लेकिन वो फॉलोअर बेस कल मोनेटाइज हो सके. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज द डोपामीन इफेक्ट, देयर इज द हाई इफेक्ट ऑफ हैविंग दिस बिग फॉलोअर बेस, एंड देयर इज अ किक इन एड एडिक्शन दैट कम्स विद इट. वो तो अलग चीज़ है, अलग नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ है वो. बट द थिंग इज कि वो जस्टिफाई करते हैं कि देखिए मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, एंड बाय डूइंग दिस आई कैन एक्चुअली अर्न माय लिविंग. लुक, वी ह्यूमंस कैन जस्टिफाई, रैशनलाइज एनी नॉनसेंस वी वांट. दिस इज द रियलिटी. ओके, सो यस, यू कैन क्रिएट, जो आप बात करें गिग इकॉनमी की, सो गिग इकॉनमी में जो सीरियस काम करते हैं, वो 3-3 4-4 B.Ed लेट्स से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करे, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सीरियस वर्क. वो रात के 12-12 बजे तक लगे रहते हैं, एंड देन दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी. दैट्स सीरियस वर्क एंड दैट्स फाइन. यू कैन टेक ऑन 2-3 प्रोजेक्ट्स एंड आप करें. लेकिन ये इन्फ्लुएंसर बनना, इट्स अ वेरी फिकल, यू गोइंग डाउन अ वेरी स्लिपरी स्लोप ऑफ लाइफ देयर. कल आपकी फॉलोइंग खत्म हो गई, आपके डिप्रेशन में आप बैठ जाएंगे, राइट. बिल्कुल ऐसे होता है. एंड यू क्रिएट एन इमेज ऑन द. इसीलिए मैं आपको जब कहता हूँ मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बिकॉज आई नो आई कैन, मैं आज आपको तकरीर कर रहा हूँ, कल आई कैन फॉल फॉर इट. आई स्टार्ट क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ माई सेल्फ ऑन द सोशल मीडिया, देन आई बिकम इम्प्रिजन टू दैट इमेज. एंड यहाँ सब चल रहे, कोई बहामा में हॉलीडेज कर रहा है, कोई चाइना में बैठा हुआ है, कोई सिंगापुर में बैठा हुआ है, एंड एवरीवन ऑन द सोशल मीडिया इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट. एंड एनीवन लुकिंग सेज, ओह माय गॉड, ये सब ये करे, आई एम द लूजर sitting over here, right? So you create, and the people who are, if I'm starting saying I'm on top of the world, then I can't even come down one step. नहीं, ये वो जो fall होता है. So then it's a alter ego and artificial image आप अपना बनाने शुरू है. Is that the life you want to live? But there's a lot of people who are happy. अब मैं I'll give you an example. ये मज़े का टॉपिक आपने छेड़ा. एक सोशल मीडिया पे एक कैरेक्टर था US में, इसका नाम था लिवर किंग.
ठीक। Liver King basically would eat raw meat and animal parts. ठीक। And he had this massive body. I mean, he was buff and ठीक। fit. और वो पिछले 3-4 साल से कह रहा है कि मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेता, मैं सिर्फ लिवर कच्चा खाता हूँ, मैं गोट टेस्टिकल्स खाता हूँ, मैं इंटेस्टाइन्स खाता हूँ, मैं मीट ही इज टेकिंग वीडियोज ऑफ ईटिंग ऑल दिस स्टफ, राइट? और वो बार बार कह रहा है 4 साल से कि मैं कोई सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स नहीं लेता. बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग जो रोगन ने क्वेश्चन किया उस पर. फाइनली somehow they managed to get an email with his test results of his blood work. And not only did he have high levels of steroids, he had absolutely health concern raising levels of steroids in his body. And he then acknowledged कि हाँ मैं ये कर रहा था और ये मेरी quality थी. exactly. But he built $100 million business in the process. He's only been sued for $25 million. $75 million का तो profit हो गया ना उसका. Well, that $100 million business is just a figure. कोई कैश इन द बैंक नहीं है. इफ़ ही हैड एग्जिटेड तो अलग. आई एम श्योर, मैं गारंटी से कहता हूँ वो जो 75 मिलियन भी है ना, वो भी 7.5 भी नहीं रहा होगा. बिकॉज इट्स अ वेरी फिकल थिंग. यू हैव टू सिंग फॉर योर सपर ईच एंड एवरी डे. सीधी सी बात है, राइट? एंड अबव ऑल, इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लीड? या आप अपने बच्चों वुड यू विश? मेरे लेट फादर हमेशा कहते थे, नया जूता पहनो तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहनने वाले को पता है कहाँ चुभता है. सही बात है. सो ये सब शोशा है. आई मीन यू लुक एट हॉलीवुड, इनकी लाइफ आप देखो. आई मीन स्लीपिंग पिल चल रही है, ड्रग्स चल रहे हैं, ब्रोकन मैरिजेस चल रही है. आई मीन माइकल जैक्सन डाइंग ऑफ दोज एक्सेसिव डोजेस. आई मीन यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स एंड द डिवोर्स रेट्स चल रहे हैं. आई मीन इवन एलॉन मस्क जो ये है, उसके 11 बच्चे हैं, 3 या 4 उसने शादियाँ की है. ये शादियाँ नाम भी उनके अंग्रेजी और नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं है. एग्जैक्टली. बच्चों का भी नाम एक का एक्स रखा है, किसी को क्या. आई एम जस्ट सेइंग दीज आर वेरी अननेचुरल लाइव्स. एंड मैं हमेशा एक चीज़, मेरा एक जो नॉर्थ स्टार है ना, इज ऑलवेज ऑन माई डेथ बेड व्हेनेवर आई लुक बैक, विल आई से कि यार आई विश मैंने सोशल मीडिया पे मेरे 500 और फॉलोअर्स होते या 1000 और होते, या आई विश मैं $100 मिलियन और मैं कमा जाता, ठीक है, और मेरी बैंक अकाउंट में पड़ा होता है, राइट? आस्क एनीवन, गो टू वन ऑफ दिस हॉस्पिस जहाँ लोग मर रहे हैं, उनसे आप जाके इंटरव्यू ज़रा करें कि भाई व्हाट एग्जैक्टली. सो यू हैव टू ऑलवेज डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग. एंड रिमेंबर, डेथ इज़ द बेस्ट concept of death is the best thing we have in life. It's the best barometer, it's the best benchmark, it's the best guardrails we have on our life. बल्कि मज़हब में भी यही कहते हैं. मज़हब भी ये कहता है, करेक्ट, कि दिन में आपको मौत के बारे में मल्टीपल टाइम सोचना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. हम अवॉइड करते हैं. एंड हमारी एक फॉल्स फैलेसी होती है कि वी लिव फॉर एवर, राइट? ये है, दिस वी आर वायर्ड लाइक दैट. लेकिन therefore religion says you idiots, think about it, right? So that is the best this thing. So you know कि तो आप अपनी जो भी चीज़ें करें, आप बिजनेस करें, आप अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले आप देखा. मैं अपना सोशल वर्क करता हूँ. फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल द पीपल इज कि मैं इधर कोई, ना तो मैं जन्नत कमाने आ रहा हूँ, ना तो मैंने कोई कर रहा है कि मैंने अपना कोई फेम करना है. नो, फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट इज कि द डे आई हिट द बकेट, ओके, नॉट ओनली दीज इंस्टीट्यूशन शुड कंटिन्यू, but they should continue and grow. अगर वो होगा, I will feel I have done something successful, so something meaningful. So sustainability is your focus. Sustainability, scalability, impact, quality, right? Or culture. These elements have to be there for institution building. वरना it's like मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ, मैं बड़ा सखी दिल हूँ. जैसे लोग हैं, मलिक रियाज है, वो अपने लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम, बट आई मीन अपने वो एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं कि हम अस्पताल चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या कोई ये जो जन्नत कमा रहे हैं. यू देन लूज दैट होल एसेंस इन लाइफ. व्हाई यू डू व्हाट यू डू इज परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट. So the why question we need to always ask. And for me also, मेरा कल, हम इंसान हैं, हमारी ईगो भी होता है, तो we have to always ask ourselves कि why am I doing this? मैं आज क्यों बैठा हूँ तुम्हारे सामने? कि is it for set publicity or is it to convey something? Maybe कोई जैसे just like you just told me, right? कि even if I can inspire that one person, it's good enough. That's enough. And that's why you're doing, and that's how you'll be successful. Because if you're bullshitting, sooner or later people will be able to go through it. And then that artificial Barbie doll type of a world you like create,
sooner or later that's going to burst. Absolutely. ये universal law है. You cannot continue bullshitting for the rest of your life and think it will be sustainable. You can do it for a while. Sooner or later reckoning होती है. ये और उसमें मजे की बात ये है कि just yesterday coincidentally, I find Tony Robbins a little cliched, but some of the stuff that he says is interesting. कल एक क्लिप मैंने देखा, उसने क्या कहा, meaning is equal to emotion is equal to life. उसने कहा कि if you find the meaning of your life, that there's a reason you are here, ठीक है, वो वजह क्या है, and if you find that meaning and you spend your life fulfilling that meaning. Is my meaning to, let's say, build enterprise and employ people and create sustainable wealth for those around me? You know, is my meaning to serve my family? Sure. ठीक है, what is my meaning? Correct. वो एक meaning जो है एक emotion evoke करती है. Right. And as long as that emotion is a positive emotion, you're going to lead a very positive and happy life. Absolutely. You're not enslaved to anything other than the meaning and purpose of your life. So during the Greeks, they would always wish each other saying, may you have a fulfilled life. ये जो happiness का concept है ना, this is a very modern day consumer oriented concept, happiness. It's short term. It's not even, I mean, if you read history में ये happiness का ये concept ही नहीं होता था. It was about you fulfilling your meaning, purpose in life. Read Marcus Aurelius' की meditation, right? It was all about, read about the Stoic philosophers. It's all about fulfilling your meaning and purpose in life. जो आज ये जो for example soldiers है, आज हमारे जो फ्रंट पे लड़ते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट, आप क्या समझते हैं वो हैप्पीनेस के लिए जाते हैं? या उनकी माँ जब भेजती है उनको फ्रंट पे नोइंग कि शायद बेटी की लाश आएगी वापस, यू थिंक मदर इज फॉर हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज नॉनसेंस. हैप्पीनेस इज अ फ्लीटिंग फीलिंग. मैं आज बैठे हैं, लंच हम कर रहे, गपशप लगा रहे, आज हैप्पी है. घर पे गए, बीवी से झगड़ा हुआ तो अनहैप्पी हो गए. इट्स अ वेरी दिस थिंग. हाउएवर आपका पर्पस, इफ़ यू फील हियर यू आर डूइंग दिस एंड इसमें आपका एक पर्पस फुलफिल हो रहा है, सम डेज आपकी रेटिंग्स होगी 4 लाख आपके फॉलोअर्स आ गए, सम डे आपके 4 फॉलोअर्स होंगे, राइट? एंड दैट बी फाइन विद इट एंड यूल बी परफेक्टली फाइन विद इट. वन ऑफ माई मोस्ट memorable talks I gave, there were 150 chairs and there were only 4 people sitting on the chair. Really? And I still remember, I've given hundreds and hundreds of talks. And what had happened was, Sheraton Hotel थी, वो कंटेनर लगा हुआ था, because धरना होना था, चीफ मिनिस्टर उधर, उन्होंने कंटेनर लगा दिया था, तो सब हो गए थे. So I reached there, it was one of the association to give a talk. So उन्होंने कहा postpone कर रहे. So there was one CEO sitting. I met him. He said, I've flown from Islamabad to listen to you. It was on India Pakistan there. So I said no, I'm going to give this talk now. Right. I stood there for 1.5 hours, gave my talk, and there were 4, and then Panchwa bhi finally aa gaya tha, and there were 145 empty chairs. Okay. It was very fulfilling for me. And you know what? It was a test for me. Why did I do what I did, right? अगर मेरे ego होता ये होता, I could not have done it. So I felt actually very good inside कि यार, you know, we need to test ourselves. We can bullshit ourselves also very easily. लेकिन उस moment में क्या करते हैं? ये that's the ultimate test. Yeah. So it is very, so purpose in life is also something you sometimes have to create. Life can be very boring, very mundane. Do you think it is created or discovered, purpose? So it's both, okay? And remember, purpose can change also. When you were 16 years old, your concept of purpose could be different. 100%. When you were 20, you were different. You as a person would have been different, right? जो आप music सुनते हैं, friend circle हो गया, पढ़ाई, लिखाई, सोच थी आपकी अलग थी. So we keep on evolving. So our purpose has to also keep on evolving. लेकिन उसकी जो synth है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि you should know why you're doing what you're doing. तो इसमें अगर मैं इसको लिंक करता हूँ, so it is discovery. तो if I link this back to, you were talking about the value system of multi-generational business families. Do you think that they've discovered a purpose that they're able to then instill across generations as well? Okay, so it's difficult for me to pass a judgment on this thing, but what they have, एक playbook उन्होंने बनाई है as far as preserving wealth is concerned. लेकिन कोई purpose तो aligned होगा ना, because देखिए that can vary from business to business. So if I'm running a casino business in Las Vegas or in Macau, my purpose, I'm not sure if it's a very noble purpose, right? But I've created a rule book on institution building, family hierarchy, और culture आ गया,
ट्रस्ट बना दिया, सो दैट विल प्रिजर्व माई वेल्थ. और उसको रेप्लिकेट कर सकता है. आप रेप्लिकेट जनरेशनल आप चल सकते हैं, राइट. सो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका पर्पस करें. I mean, क्या when you contextualize, we spoke about astronomy, when you contextualize the overall thing, कि क्या हमारी एग्जिस्टेंस है या कितनी फ्लीटिंग मोमेंट है वी सिटिंग टुडे, एंड उसमें आप ईगो ला रहे हैं. आई कैन जस्ट से कि द गाय इज एन इडियट टू एवर थिंक कि कुछ ईगो है या इट्स नॉनसेंस. नहीं तो इसमें तो ईगो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये तो एक क्लियर है. और ये अक्सर ये देर में फिगर आउट करते हैं लोग लाइफ में कि ईगो क्या है. जॉन लेनिन ने कहा था कि आई विश everyone becomes rich and famous so they understand that happiness has nothing to do with it. That's a very good quote. Yeah, and absolutely. Remember, पैसा ज़रूरी है. इस्लाम भी creation of wealth encourage करता है. Our beloved prophet, peace be upon him, was a business person, right? He was an entrepreneur, he was a businessman, he created wealth. Absolutely. लेकिन how he spent the wealth, yes. how he fulfilled his purpose in life, did not, kept that thing, that is much more important कि कैसा आप वेल्थ को आप क्रिएट करते हैं, उसको आप स्पेंड करते हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी आती है. एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ ऑल्सो विद इन सर्टन एथिकल फ्रेमवर्क्स, राइट, एंड वॉट यू डू विद द वेल्थ. सो वेल्थ इटसेल्फ इज गुड, इट्स फाइन, एंड आपको ज़रूरत है, राइट. सो स्टडीज हैव शोन कि there is a certain threshold. उसके तो अगर आपने I've seen that income number. There's an income number. It is $200,000 for a developed society, right? For, yes. So 167. Yeah, I made hundreds. Right, 160. It's a number that you look at. You're like alarmed. कि अच्छा, I'm not creating greater happiness beyond this number. Yeah. Because you've covered all of your major life comforts. Absolutely. So अगर वो आप करें, उसके बाद आप करें organically करें, no problem. There is a law of diminishing returns also beyond thing. जो लॉटरी जो जीतते हैं ना, दिस थिंग, अगर आप देखें लॉटरी की एक हाई होती है, हैप्पीनेस कोट एंड कोट, राइट, वो होती है. आफ्टर 3 months you actually come down to exactly the same place where you were. And if you're not careful, that millions of dollars creates more unhappiness in your life, then actually you start going down, right? Because it's very disorienting. आपके दोस्त के तेवर चेंज हो जाते हैं, then you start being very suspicious. वो मेरे पैसे के पीछे आ रहे, रिश्तेदार क्यों आप आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे थे, right? So all of these dynamics run. Yeah, if you, God forbid, you become disabled, right? You become sadness. In 3 months' time, you come back. You come back to the same. So lottery like this, you come back same. Some accident, you come back the same. It's all a mental game, and you can actually, again, it's about your purpose in life, right? If you can align your purpose and your life together, फिर आपको अंदर से आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है. जब आप ये ड्रग्स एडिक्शन, शराबें, क्यों, जब हमारे अंदर जब हॉलोनेस होती है, उसको आप फिल करते हैं, आप फिल करते हैं, राइट. आपको डोपामीन स्पाइक चाहिए. डोपामीन स्पाइक चाहिए, राइट. डोपामीन स्पाइक के लिए ये सारे सब्सटेंस. अच्छा, एग्जैक्टली. मेडिटेशन भी डोपामीन स्पाइक देता है. नो, मेडिटेशन इज सेरोटोनिन. Serotonin. And dopamine is different. It's a dopamine rush, right? Dopamine is a rush. Serotonin is good. So what you need to look for is joy, yes, not for happiness. Joy is, you look at one flower. Look at I take a walk with my mother every day in the garden. We look at each and every flower, okay? And we look at the texture, we look at the shape of the leaves, of the flowers, the colors. And my mother always says, how nobody can understand nature. How fascinating. It's walking through a museum which keeps on changing every day. Now, once when you start to contextualize that, then it is pure joy. It's instantaneous. Because जब आप कहते हैं ना कि मुझे ये नया iPhone 15 आ जाएगा, तब then I'll be happy. That means I'm not happy today. जब मेरा 15 आएगा तब मैं हैप्पी होऊंगा. एंड गेस व्हाट, जब 15 मिलेगा तब तक 16 भी आएगा, एंड वो 15 का 3 महीने में वो यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, राइट. सो ये कंज्यूमर सोसाइटी हमें ब्रेन वॉश करता है. गाड़ी आएगी, मोटरसाइकिल आती थी, फिर साइकिल उससे पहले थी, फिर गाड़ी आएगी, फिर फरारी आएगी, फिर हेलीकॉप्टर आएगा, फिर प्राइवेट, देन आई विल गेट हैप्पीनेस, राइट. सो हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट फॉर अस, while joy is free. It's instantaneous. You can sit here, just breathe, right? And you sit for meditation. If you sit, you go into that space, and it's just
connection. As Coco Chanel said, right? The best things in life are free. Right. The next best are very expensive. So it's better and much cheaper to walk in your garden or just stand by a tree and breathe in and look at the texture in the nature. यार हमारा रिलीजन, हमारे वी आर इडियट्स, हमारा मज़हब हमें इतना सिखाता है. एंड गॉड इन कुरान ऑल्सो रिपीटेड सी कौन सी तुम नेमतों को तुम जुटलाओगे, राइट? हम वी आर इडियट्स. इसके लिए बार बार खुदा हमें डंडे से कह रहा है कि वी आर अनग्रेटफुल. वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स टू ऑफ ऑल द नेमत दैट इज शावर्ड upon us every second of the day. You're breathing. How many? There are people who are drowning or on ventilators today. Yeah. Just take a nice breath and you say Alhamdulillah, right? And you feel grateful. तो आपके जो भी आपकी वरीज होगी. तो मुझे एक बात बताएं, हमारे मज़हब में कहते हैं नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त में, राइट? इसी वजह से पढ़नी चाहिए ना कि आप 5 वक्त में 5 मिनट के लिए आप एक ब्रेक लें. ठीक है, ब्रेक लेके सांस लेके आप ब्रेक लेते हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूँ. बट एक्चुअली हम पढ़ते हैं. पर्पस तो यही है ना. एक्चुअल पर्पस ये कि आप अपनी लाइफ में, अगर आप देखें नमाज जिस तरह सेटअप हुआ है, इट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स. स्टार्ट योर डे, middle of the day, when you're finishing your work day, right when you're finishing your dinner, in the evening at home, and then finally right before you go to bed. स्ट्रक्चर, आपके दिन का स्ट्रक्चर बन गया है. सही है. ठीक है, 9 बजे अगर इशा हो गई है तो आप 9:30 10 बजे आप सो जाएं, ताकि आप फजर के लिए उठ जाएं. हम यहाँ डिनर जो है 11 बजे खाएंगे इशा पढ़ के. ठीक है, अगर हम सिर्फ यही पैटर्न फॉलो कर लें, डोंट यू थिंक वी विल बी एबल टू बी अ हैप्पियर सोसाइटी? सो इसमें लेट मी गिव यू अनदर टेक ऑन दिस. कैरन, मैंने आपको लिंक भी भेजे. कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की लास्ट बुक आई है सीक्रेट नेचर, राइट? आई मॉडरेटेड अ सेशन, लुक एट इट व्हेनेवर. सो हर होल थिंग इज कि जो रिलीजन एंड स्पिरिचुअल हमारे जो ट्रेडिशंस आर और ऑलवेज लिंक्ड विद नेचर. ठीक है, जब आप नमाज भी पढ़ते हैं, इट्स ऑन द सन के राइज एंड सनसेट से होता है. बिल्कुल ऐसे ठीक है. आप कुरान में देखें, टॉक्स अबाउट यूनिवर्सेस, वर्ल्ड्स, इट टॉक्स अबाउट डिस्कवरिंग, राइट? डिस्कवरी करें. Look at the wonders, the creation of Almighty, right? It's fascinating. आप जितना आप देख, the more you understand, the more you know, the more you realize how little we know, right? आप नमाज भी जब आप पढ़ते हैं, it's about unconditional surrender. जब आप सजदा करते हैं, it's about unconditional surrender, right? मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि मैं करूं जिक्र, तू कर फिक्र, right? It's all about, and then you surrender, right? What was Ghar Hira, our beloved prophet, right? He had spiritual elevation while doing meditation, surrender in Ghar Hira. Imagine उस टाइम में कुछ नहीं था. It's pitch dark, nice, scary. मैं गया, you know, I went there. Wow. Actually, that is one place I really would like to go. मेरा perspective जिंदगी का change हुआ when I went through the rocks. और वहाँ मैं गया और खड़ा हुआ, and my wife was with me and she's like, तुम मुझे कहाँ लेके, and it's not developed at all. कोई सीढ़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है. गर्मी में हम ऊपर गए. ऊपर पहुँच के जब वहाँ पहुँचे, अच्छा सब लोग वहाँ पे जाके सजदा कर रहे हैं और नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और मैं I don't know what happened to me. मैं वहाँ खड़ा हुआ. And I just closed my eyes and I said, imagine 1400 years ago, what was he doing here? मुझे उसका जवाब नहीं मिला उस दिन. मैं क्या what was he doing here? What was he? अच्छा, फिर मैं दूर से आपको खाना काबा नज़र आ रहा है. मैंने कहा रात होगी, सर्दी होगी. What was he doing here? ठीक है, मैं आ गया. This was October 2019. Feb 2020, March 2020, I discovered meditation. किसी ने मुझे nudge किया. जब मैं फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, तो मेरी वो टाइप ए अग्रेसिव हार्ड चार्जिंग पर्सनालिटी. मैंने कहा you're hardwired. I'm hardwired. I can't slow down. तो मैंने कहा ये मेडिटेशन वगैरह मेरे लिए नहीं है, प्लीज़. मतलब they're like just so someone I couldn't turn down. So I said ठीक है, let's try it. मैंने 4 दिन मेडिटेशन किया, गाइडेड मेडिटेशन. चौथे दिन पे एकदम मेरी आंखें खुली, बिकॉज आई सॉ what was happening. क्योंकि सिर्फ ब्रीदिंग से आई फेल्ट एलिवेशन, आई फेल्ट अ सेपरेशन कि यार इंसान की बॉडी और सोल में एक डिस्टिंक्शन है, राइट? और मैंने कहा एक सेकेंड, यहाँ पे एक कमरे में बैठ के 5 और लोग हैं और हम खामोशी में मेडिटेट कर रहे हैं. इमेजिन गार हिरा, 40 दिन अकेले, and the level of peace and joy that you achieve just by breathing. सिर्फ आप सांस ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई फ़ोन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई शख्स नहीं है. It changed
my approach and perspective. I think everyone has to go to Ghar Hira once. जब भी वो जाएं खाना काबा. That's one of my thing I would really. It's So 100%. meditation, you mentioned. My father did meditation throughout his life, from 4 to 5 in the morning. I would do it regularly with him, and that was one of the changing, defined me in many ways. It just grounds you, and it clears your mind out, and it's just there is so many things that open up, and it clarifies your entire life. I'm not scared of death. I've had 4 near-death experiences, close calls, let's say, and I'm perfectly fine with it. लेकिन मुझे एक बात बताएं, right? जो you just said something which for most people is the reason they don't do this. कि मैं सुबह 4 से 5 बजे, सुबह 4 बजे कौन फंक्शनिंग लाइफ में. ओके, फेयर पॉइंट. यू नो व्हाट, आप 4 बजे नहीं करा, आप अभी बैठ के कर ले, और आपसे 1 मिनट के लिए कर ले, आप 2 मिनट के लिए कर ले, हाउ एवर यू फील कम. मसला ये, इसको आप सर पे कोई, डोंट मेक इट इनटू अ 10 feet काइंड ऑफ 10 ton बर्डन नहीं बनाए. मेडिटेशन इज नॉट, इन माई बुक्स, इट्स नॉट अ वर्ब. You don't do anything. All you do, Islam is the perfect thing about unconditional surrender, right? It's not because our brains are wired, like you said, hardwired. You just have to submit, right? As Rumi had said, right? क्या था? Shed the wilderness, shed the cleverness, embrace the wilderness. Okay, हम हमारी चलाकियाँ, होशियारी, you just surrender, and that is the real faith. It's not the ceremonies. जो pillars of Islam है, ये pillars है ना. What is the end purpose of a pillar? Pillar is to build something on something, ना, that humanity की आप बात करें, आप इंसानियत की बात करें, या whatever. इंसानियत खड़ी हुई है. हाँ, राइट. ये जो है ना, तो ये हम पिलर्स में से सेरेमनीज में अगर हम पढ़ेंगे, एंड देयर इज एन एसेंस. दैट्स व्हाई ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एसेंस ऑफ इस्लाम अबाउट हुकूकुल इबाद, सर्विंग, एथिक्स, व्हेन वी कॉल आवरसेल्व्स मुस्लिम्स, our role model is our beloved prophet. There is no other better role model. Look at his life on ethics, compassion, forgiveness, speaking the truth, so many. And remember, Arabia was a very harsh environment, right? And in that, to bring that kind of a revolution, women's right की आप बात कर रहे, right? And compare Pakistan today. In fact, that was a harder place, much harder place at that time. Of course. So I'm saying कि देखिए ना, ceremonies again has a purpose. What do you mean by ceremonies? जो आप कहते हैं? Give me an example. So for example, every religion on planet Earth has certain ceremonies. ठीक है? Ceremonies are there to enforce or to enhance your essence of the faith. So first we need to be very clear what is the essence of Islam. So आप मुझे इस्लाम में कोई ceremony example दे दें. For example, मतलब बकरा ईद ceremony हुई? Yes. So again, बकरा ईद, again, जब हम खुतबा जब होता है, तो they talk about, it's all about sacrifice for Almighty. It's about, sacrifice something you're attached to, right? Very dear to you, right? So those symbolism is very important. You see, बकरे काटे, गोश्त वोश खाए, फैमिली से मिले, and next day this thing. रमज़ान में जब आप रखते हैं रोज़े, it's not just खाने पीने का, right? It is about आपकी anger. It's about, आप देखें तो हरकतें क्या होती, प्राइसेस बढ़ जाती है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है. आप क्या समझते हैं कि रिश्वतें कम हो जाती है रमज़ान में पाकिस्तान में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हमारा जो है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप्स, विच इज़ शेमफुल कंसिडरिंग सेरेमनीज में, हज, उम्रे में वी आर वन ऑफ द हाइस्ट, वी डू इट, राइट? एंड सो इट्स वेरी गुड टू डू Hajj, like Baba Bulle Shah would always talk about, or other Sufis would talk about, right? And this has always been a historical clash. So not just in Islam, it was in Christianity, Buddhism, everywhere, right? So it is very important कि essence, humanity, वो आप lose नहीं करें. So जो भी आप ceremonies कर रहे हैं, we need to be very mindful. It has a purpose. Even when you say कि our beloved prophet 12 रबियोल हम celebrate करें, आप देखो तो value systems क्या थी of a beloved prophet. Are we even coming this much to it? How can, if you're not coming this way, then how can you
call yourself Muslims. किस yard से, just by doing ceremonies, you cannot claim that our beloved Prophet is my role model. So isme then let me bring this back to your earlier point of religion versus spirituality. Right. This, what I'm taking from this, कि religion जो है is a recognition and celebration of the rituals versus spirituality is more of the essence. No. I think my interpret, देखिए इसमें ये sensitive topics है, मुझे इसमें ज़्यादा नहीं करना है, but because I don't want to offend anyone, लेकिन for me religion is spirituality. Religion is spiritual. Is spirituality. Religiosity is an extreme view, like across the border in India, there's religiosity. RSS is religiosity, right? तो उन्होंने एक पॉइंट को एक्सट्रीम पे लेके उसी को फोकस कर रहे हैं, and then एक certain interpretation. और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, राइट. क्रिश्चियनिटी में ये हुआ था, वो भी हुआ था. कू क्लक्स क्लैन थे, वो भी एक रिलीजियोसिटी है. Religious fundamentalism तो हर religion is a term coined from American Christianity, the Ku Klux Klans and all these people. It had nothing to do with Islam. Islam में ये extremism का concept ही नहीं था. ये तो 9/11 के बाद इस्लाम, extremism, terrorism, etc. Jihadul Akbar is what? It's about your own. That's a greater jihad, right? It's about आपने अपने आप के अंदर आपने जहाद करनी है to make yourself a better human being, right? That is the essence of it. And even jihad, with the lesser jihad is jihad of conflict. वहाँ भी there are a lot of preconditions to it, right? कि you cannot attack a retreating army, you cannot burn their crops, their assets. And jihad is also in Quran कि you can wage jihad if your temples, your synagogues, all of them are being attacked. Because they are also places of worship, right? So, it's not just for Muslims, it's for all religions. Jahan, if you're being attacked, you have a right to self-defense. So, ये concepts are very clear अगर आप पढ़ें, लेकिन people have their own interpretation. And again, I repeat myself, ये इस्लाम का ज़्यादा इन्होंने ये वेस्टर्न ने टंटना निकाला है, ये थ्रूआउट ह्यूमन हिस्ट्री ये स्ट्रगल रही है, और सारे रिलीजन्स की रही है, एंड सारे रिलीजन की रही है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया है, एंड आई थिंक दैट वी मिस आउट ऑन दिस स्पिरिचुअलिटी पार्ट ऑफ इट, द मीनिंग एंड द रीजनिंग पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ सबमिशन है, व्हेन यू सबमिट यू सरेंडर, unconditional and surrender. When you unconditionally surrender, suddenly वो आपका ego की जो बात हुई थी, the ego is also gone, dissolved, finished. No, then you know meditation में ये होता है कि, and ये जो है ना कि meditation में, now you've gone through it, a lot of people try to do meditation and then they say, you know, oh I tried but it's not for me, मेरे से नहीं हो रहा है, right? My mind is too busy and everything. तो ये एक तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ही गलत है कि आप मेडिटेशन में बैठे, आप अपने माइंड को बिल्कुल ही थॉट्स को आप क्लियर कर दो, जीरो कर दो. It's only when we are dead कि हमारा माइंड स्टॉप होगा. सही बात है, राइट? इट्स अबाउट जस्ट सरेंडरिंग एंड एक्सेप्टिंग. आपकी थॉट्स आ रही आने दो, फ्रंट विंडो बैक विंडो खोलो, इट्स लाइक अ क्लाउड, लेट इट फ्लो, अलाउ योरसेल्फ टू गेट बोर्ड. बल्कि एक बड़ा अच्छा एक ऐप है, इट्स कॉल्ड हेडस्पेस. हेडस्पेस ऐप के अंदर जब मैंने, आई थिंक दिस वाज 20, वही उसी, इट वाज अराउंड दैट टाइम आई गॉट द ऐप, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट. उसने बड़ी एक सूदिंग कामिंग ब्रिटिश वॉइस है, और उसमें जब वो गाइडेड मेडिटेशन करता है 5 मिनट की, विद यू हैव योर हेडफोन्स ऑन और आप सुन के करें, उसमें एक चीज़ वो कहता है ना, योर थॉट्स आर कमिंग इन, वॉच योर थॉट्स एंड जस्ट पुश देम असाइड, कि अच्छा ये अच्छा ठीक है, मुझे कल ये ऑफिस में ये करना है, अच्छा ठीक है, साइड. बाय द वे आई वुड डिसएग्री कि पुश देम असाइड. आप कुछ नहीं करें, थॉट्स ऑटोमेटिकली दे विल, इट्स अबाउट एफर्टलेसनेस. You don't push it. Front window, back window, खोलो, let cloud, they will automatically. Sometimes I sit, I have a very, you know, I've had this thing, it takes me 45 minutes to calm my mind, and automatically, if I'm forcing my mind to be calm, then it becomes very counterproductive. But sorry, in fact, you lose the whole objective of it. So for 45 minutes, मेरे thoughts आ रहे, no problem. It's about surrender, unconditional that's surrender. What he said. He said, imagine the thoughts are on a highway just like cars, and you're sitting on the side and watching the cars go by. Yeah. And you're observing. And again, ये सब automatically होगा.
लेकिन इसमें अब ऑटोमेटिकली होता प्रॉब्लम है। वही दूसरी प्रॉब्लम, एक तो वो 4 बजे वाली मैंने प्रॉब्लम बताई। अरे बाबा 4 बजे छोड़ दो आप। ठीक है। आप दोपहर के 12 बजे दूसरी करो। प्रॉब्लम अब आपने कही कि यार 45 मिनट लगते हैं अपने आप को काम डाउन नो करने नो में। नो, अब मैं सम यहाँ डेज से मैं कैन बी फॉर निकलूंगा घर, 2 minutes। वाइफ का फ़ोन आएगा, बच्चों का फ़ोन आएगा, घर जाके फिर सो अम्मी, फिर सो फ़ोन, नो लाइक इट्स सो सबकी लाइफ में ये चल रहा होता नो है, राइट? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए, इट्स अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट्स हाँ। अबाउट रिवायरिंग। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, आपकी 10 आपकी ये चल रही है, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, इंटरनली विल बी वेरी तो काम। ट्रैफिक में बैठ के आप काम आज तक यू मैंने डू किसी यू को डू नहीं यू डू देखा कम है। अक्रॉस सम पीपल जो जरा सा, आप कभी ट्रैवल करते हैं ना, वो आप जाते हैं ना चेक इन काउंटर पे, कहीं कहीं वो पैसेंजर शोर मचा रहे हैं, हाँ ये हाँ क्या हाँ। डा डा डा। इट्स द इंटरनल वॉइस, इट हैज नथिंग टू डू विद द टिकट, इट हैज नथिंग टू डू विद द लेडी सिटिंग अक्रॉस द काउंटर। इट्स योर इंटरनल वॉइस गोइंग डा डा डा, इट्स द इंटरनल टॉक्सिटीज। हाँ। जब भी आप बात करते हैं ना, इट्स ऑलवेज a रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वॉइस। Inner voice is just electrical pulses that are going, it's just an illusion in our head, right? If you can calm that voice, and a lot of people है जो who don't react, आप उसे कुछ भी कह दो, वो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, right? And it's all about, and that's what it is, inner calmness. Externally होते रहता है, it's a busy life and everything, you don't have to react to each and everything. As Winston Churchill said, if you start throwing stones at every dog that barks, you'll never reach your like destination, right? True. So again, that comes to your purpose in life. What is your damn purpose in life, right? If you're clear in your head, it's not about what you do, more importantly what you don't do, right? तो बिकॉज इट नाउ, लाइक वी स्पोक अर्लियर, इतना डिस्ट्रैक्शन है न्यू जनरेशन के लिए, डिंग 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 मल्टीटास्किंग है, एंड इट्स तो वो अपनी पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं? If इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ वो, आई एम प्रीटी श्योर मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, they've got all of these stimuli hitting them at the same time. How can this generation find their purpose, well, at any point in their life, but let's say in their 20s? सो आई टेल यू व्हाट, 20s हो, 15 हो, 30s हो, आपका एक डीप इनर वॉइस है, एक हमेशा इनर वॉइस होता है, राइट? तो वो आप, यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस, राइट? लाइक वी स्पोक अबाउट सोशल में, एक आपने एक पर्सोना बना देते हैं। मैं इधर बैठा हूँ सूट पहन के, बड़ा कूल लग रहा हूँ, एंड आई थिंक मेरा एक इमेज बना हुआ है कि मैं बहुत बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत फन्ने खान हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, एंड हमने एक इमेज बनाया हुआ है, राइट? सो इफ आई स्टार्ट बिलीविंग माई ओन बुलशिट, then I've created, then I'm always stressed to make that thing. And कोई ये कहेगा, बोले ये आप कैसे, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, ये आप, how dare you say this thing, right? You चल, so you do, so एक, once when you calm inside, you understand who you truly are, right? And उसमें हमने astronomy की भी थोड़ी सी before हमने बात की थी, you have to contextualize कि how insignificant we are in the overall context, and this is something we need to. So it is very important to be a philosopher, to understand what your own philosophy, develop your own philosophy in life, right? So you have to read. People don't read. Depth thinking में आनी ज़रूरी. We are living in a very superficial this thing. आपने read की बात की, Amina Sayyed was here from the Oxford University Right. Press. I know. She said that a bestseller in Pakistan means you've sold 500 books. Right, exactly. So no one reads. No one reads. So then that Right. means no one will ever reach enlightenment in this country. Right. और ये 500 by the way English है, उर्दू की तो और कम है. Yeah. To be a bestseller. By the way, I had published my poetry book. I sold slightly more than 500. Right. So I was quite happy. But again, yeah. And but to your point, read is the first thing. Read, have your own philosophy. So by the way, from my bedroom to my office, it's full of books. And I buy books knowing I'll never get time to read them also. And I'm fine with that. I'll flip through it. I'll just look at it and it's just nice. Right? अब तो मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ, जगह कम लें, ब्लिंकिस्ट डाउनलोड कर लें. ब्लिंकिस्ट में वो आपको क्लिप्स दे देगा. ब्लिंकिस्ट मैंने सब्सक्राइब भी की थी एक मर्तबा के, दो मैं नेवर एंडेड अप रीडिंग दैट, इट जस्ट डज नॉट रियली कम थ्रू. राइट. लेकिन बट कमिंग बैक टू द फिलॉसफी, सो दे हैव टू डेवलप अ फिलॉसफी, दे हैव टू रीड. देखिए, there are no shortcuts. ये realization आपको आनी चाहिए. There are no shortcuts. It's like, you know, everybody wants to, you know, let's say paradoxes in life होते हैं, right? Everyone wants to go to heaven, but nobody wants to die. Right. Right? Nobody wants to die young, but nobody wants to grow old also.
right? So you Everyone need wants to eat dessert, but no one wants to get fat. right, exactly. So you need to come up with a kind of a balance, right? Right. So organization में भी होता है कि you have to do a balance between the logic and the magic, and that's how you create that. A mind left, you left brain right brain की हम बात करते हैं. Strategies में आप देखते हैं तो you need to have an offensive strategy and a defensive strategy simultaneously, and it's always a balancing act. And So, having a defensive strategy doesn't mean you're retreating or failing. not at all. So a certain portion you need to contain your core, right? That's your armor. वो आपने आपका core है, उसको आपने Protect preserve करना करना है. है. At the same time, you need to venture out, do some crazy stuff, and risk and fail. The Silicon Valley model. So maybe you keep a 30% as a wild Silicon Valley model and 70% as a traditional growth, organic growth model. So you need to do a combination of both. You can't do one extreme or the other, right? A good investor is a combination of economics and psychology and temperament. You need to have these two competing qualities, and that is what distinguishes successful leaders from just being, swinging one end or the other. So ये बहुत ज़रूरी है कि paradoxes की आपकी self awareness जब तक आप नहीं करेंगे, it's impossible for you to have a fulfilling life. It's impossible for you to have a grounded life. All our spiritual traditions talk about it. Nature की जब बात करते हैं उसमें आज जो आपका ये जो डेविस्टेशन हो रही है, एनवायरमेंट इश्यूज क्यों है? बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी जो शहरों में हम रहते हैं, वी डिस्कनेक्टेड आवरसेल्व्स फ्रॉम नेचर. तो बुद्धा वाज अंडर अ बनियन ट्री ऑन अ लोटस, अगेन नेचर, राइट? अ बिलवड प्रॉफिट, अगेन नेचर. A Quran talks, it's all about nature and creation of God. You appreciate God by looking at God's creation. That's nature, right? You look at Christianity, look at Judaism, all of them are connected. Buddhism, all of them are connected with nature, right? Even Taoism, you talk about, right? Confucius bhi, halanki uski society, but again, it's all about nature, right? So all these cultures and spirituality are interlinked with nature. So one of the reasons why our society is disconnected, because हम कहते हैं environment disaster हो जाएगा, वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग 3% पे पहुंच जाएगी. दैट डज नॉट रेजोनेट विद पीपल. वी फिगर्स, लॉजिक डज नॉट रेजोनेट. वी आर इमोटिव, वी आर इमोशनल क्रीचर्स. So it's only when you bring nature into your whole life, 360 degrees, you start connecting. I love watching the sky, and it's fascinating. It's scary also when I start looking at the scales of things, be the Milky Way and the galaxies, and even the Andromedas. So it contextualizes and it connects, and you realize how, and it's just fascinating. So And this is connecting- very very important. आप बोले कि नहीं, मैं टिकटॉक पे भी होना है, मैंने फेसबुक पे भी होना है, मुझे ये भी सारा होना है, मुझे इतने फॉलोअर्स भी चाहिए, एंड आई वांट टू हैव अ फुलफिल लाइफ. You cannot have your cake and eat it. इसमें एक मुझे किताब एज यू वर स्पीकिंग याद आ रही थी, मैंने पढ़ी थी. इट्स कॉल्ड विक्टर फ्रैंकल की है, मैन सर्च फॉर मीनिंग. Absolutely right. The Holocaust The survivor. Holocaust right? survivor, he lost his family. He was, I think, early 20s at the time. Right. He just entered the Holocaust, and he was in a camp for 3 years. ठीक है? And he went on to become a psychologist, Correct. and then he ended up practicing. He had a theory, I forget the name, उसकी अपनी practice का style होता था. Anyways, उसमें एक जो चीज़ लिखी, as you're speaking about nature and being outside, and you talked about purpose and meaning and all of that, he mentioned one thing which really struck me. He said that there were people who would die around him. Right. Yeah. Acha, he could tell when someone is going to die. Right. Yeah. He remember. said that people would have this hope, ठीक है, and you could see them having sustained hope. Life वो बिल्कुल कह रहे हैं कि यार शायद कल हम निकल जाएं, शायद परसों हम निकल जाएं, कुछ छुट्टी हो जाए, कोई फ़र्क हो जाए, whatever. एक दिन उनका होप लूज होता था, वो सिगरेट मांगते थे और सिगरेट पीते थे. ठीक है? And it was almost as if कि उन्होंने वो सिगरेट as their last bastion of hope, एक last फीलिंग, एक लास्ट रश के लिए उन्होंने सिगरेट पिया,
और उसके बाद अगले 4 दिन में जो हट्टा कट्टा बैठा हुआ इंसान है, जो होप के साथ चल रहा था, उसकी एकदम दिमाग में होप गया, उसने सिगरेट पिया, लास्ट उसको एक वो हिट मिला ऑफ रश जो आपने बात की है ना, हैप्पीनेस का, उसके बाद 3-4 दिन में ही इज़ डेड. यानी कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक यू आर क्रिएटिंग एंड यू आर कंट्रोलिंग अ स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन प्रिजर्व योर लाइफ. और जब मैंने ये किताब पढ़ी, मतलब वो तो यहाँ पे तो हमारी रिलीजन और उस कल्चर में हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी है, राइट. बट उसने क्या कहा कि ये एक ऑब्जर्वेशन थी उसकी. ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्ज़ी होती है हर चीज़ में, लेकिन उसकी नहीं ऑब्जर्वेशन अल्लाह भी कहता है कि आप अपने ऊंट को जरा वो बांध के रखो, देन टॉक अबाउट इट, राइट. तो उसमें मुझे ये बड़ा Do your इंटरेस्टिंग part. लगा कि आपको हमेशा होप रखना चाहिए, होप पे फोकस रखना चाहिए, और आपकी होप और आपकी एक एस्पिरेशन और आपका एक ऑब्जेक्टिव और मीनिंग ही आपको आगे फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाएगा. Exactly, that's exactly this. So it's about positive energies, right? It's Right. about, and also it's about purpose. And for me, purpose supersedes even your positive thing. The कहावत है कि a ship is safest in the harbor, but it was never built to stay in the harbor. You suppose life is about adventure. It's about taking risks and dying at times in the process, right? ये जो पहाड़ जो क्लाइम करते हैं, lot of them don't come back. They right? don't come back. And you wonder कि यार क्यों कर रहे हैं Yeah, ये लोग? right. And you read Ali one Saad of Para, those. बल्कि he was the one who Yes, lost his, yes, right? right. But you see the guy, vibrant था, but that's fine. अगर I'd rather he, okay, उसका आप नाम मुझे आपको याद है, I'd rather die like that with fulfilling my purpose rather than on some bed dying of bloody cancer and forgetting about it, right? At least I did it in the process of fulfilling. आज नहीं कल तो मरना है, तो I'd rather do it in a much more thing, in a much more thing. So purpose in life supersedes all of this. And also, if you remember Maslow's law of hierarchy of human needs, right? So again, you have to have that higher purpose in life. ये basic तो आपकी needs आ जाती है, सबकी आ जाती है, but if you do not elevate, again, our religion talks about this, right? Self-actualization. Exactly. It's about this thing, and Ghare Hira, it's about the higher purpose, right? Our beloved Prophet has so many odds against him. I mean, if you really think logically, what was the chance of them winning battles? Odds, Quraysh में, everyone gunning for him, right? वो कचरा फेंकती थी औरत, we know about that, but his reaction is compassion for his enemies, right? These are the lessons. बल्कि वो जो 70-30 रूल भी आपने बोला है, the retreat to Medina was sort of like almost like the 70% care focus on building your core and strengthening your core before I go after that 30% adventure towards Makkah, right? Right. Yeah. आपकी foundations strong होगी तो फिर आप जाके आगे conquer कर सकते हैं. Exactly. So I think it's not rocket science. It's about just हमारी सारी traditions में ancient wisdom में है. If we just stop being bunch of idiots, I think there is a lot one can always, So let me sift all of this. We talked a lot about different topics, a lot about spirituality, ego, purpose, meaning. Let's take the context of this discussion and let's apply it to today, right now, in this moment, what's around us. In Pakistan, the current state of affairs, the economy, the inflation, it's hitting everyone and it's hitting them hard. Do you think that our leaders, हमारे जो चला रहे हैं हुक्मरान इस मुल्क के, क्या वो enlightened नहीं हैं? क्या उनकी लाइफ में मीनिंग नहीं है? क्या उनकी लाइफ में पर्पस नहीं है? क्या वो ईगो ड्रिवन है? और अगर ये इसी तरह के लोग हमें मिलेंगे इस मुल्क चलाने के लिए, तो ये मुल्क आइंदा चलेगा कैसे? So two things, I'll just respond to that. Number one, लीडर्स जो है ये चांद से नहीं आते, ये हमारी सोसाइटी से ही निकलते हैं. एंड आई थिंक इट्स इन द कुरान ऑल्सो के सोसाइटी विल गेट द लीडर्स दैट दे डिजर्व, उसी से आते, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट अबाउट, एंड ये वी नीड टू शेड दिस मसाया फीलिंग, दिस कॉम्प्लेक्स कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हम कल्ट पॉलिटिक्स में आ गए थे, एंड वी आर लेजी कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए ऐसा गोल्फ खेल रहे, गोल्फ कोर्स भी चल रहा है. सो वी नीड टू स्टेप अप आवरसेल्व्स, राइट? दिस इज एब्सोल्यूट रबिश कि आप समझते कि आप गोल्फ कोर्स पे बैठकर एंड आपका लीडर कोई आसमान से टपकेगा और आपकी डेस्टिनी चेंज करेगा. एब्सोल्यूट नॉनसेंस. हिस्ट्री आप पढ़ लें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. और जब हम भी इस किस्म की तवक्को करेंगे तो वी आर टॉकिंग नॉनसेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान, इफ़ यू सी 1947 में कुछ नहीं था. विद इन 15 years वी वर वन ऑफ द लीडिंग एशियन टाइगर्स,
राइट, इमर्जिंग एशियन टाइगर्स ऑफ एशिया। वहाँ से आप देखें आज हाल इट्स अ स्पेक्टेक्युलर फॉल। You don't find nations going like this from zero like this and then falling. From tiger And to kitten. yeah, so it बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलते हैं जो so the positive thing हमारे अंदर ingredients है, जरासीम है to be a very progressive nation. We have really this thing. So उसमें 70s का जो था, everyone and I've spoken earlier on, 70s के era was our turning point. And उसमें मैं आपको Downward turning? Downward turning. Number one was आधा मुल्क गया अर्ली 70s में, ठीक है। देन कम्स योर मार्शल लॉ, राइट, के वहाँ उससे पहले भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन कर दिया, तो प्राइवेटाइजेशन की भी छुट्टी हो गई, आधी मुल्क की छुट्टी हो गई। एंड देन इट कम्स 1979। 79 में 4 इंसिडेंट्स हुए हैं। नंबर 1 द इरानियन रेवोल्यूशन, मिलिटेंट शियाइज्म। नंबर 2 वाज द सोवियत इन्वेजन, तो मिलिटेंट इस्लाम coming in, and we were the PhDs on militant with the Americans. We were the guns for hire, actually. Yeah, guns for hire, right? So वो था. Then the siege of Mecca, all right, happens 1979, and वहाँ the clergies and the kings, एक बार dynamics थे, clergies took the upper hand. उसके भी during that, if you read certain water, so the king had to give some space to the clergy. So again, the militant or the extreme views in the Wahhabism started coming that. And the fourth was the hanging of Bhutto, 1979, right? These 4 events happened, okay? These are big these milestone events. And absolutely. And उसका जो impact आया 20 साल में आया है, right? आफ्टर दैट यू सी टक टक टक, ज़रूरी नहीं कि ये इवेंट्स हुए उसका इफेक्ट 1 साल में आएगा, इट टेक्स years and years, बट दैट फॉर मी वॉज, एंड आयरॉनिकली 79 was the year when PIA bought Roosevelt Hotel. What a landmark, the biggest property in the commercial capital of the world bought by PIA. हम कुछ तो काम हम सही कर रहे थे, we were not idiots. न्यूयॉर्क टाइम्स में लास्ट वीक रूजवेल्ट की पिक्चर आई है, आपने देखी थी? Yes, I know. So again, it's symbolic कि हम कहाँ थे 79 में और कहाँ हम पहुँचे हैं, राइट? सो ये हमें समझना है कि ये हम कहाँ से हमारे डिक्लाइन आया है, फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द लीडिंग एशियन टाइगर्स टू बिकमिंग टुडे एज यू नो कि हम IMF के पीछे हम जा रहे हैं, राइट? सो ये हमें, अगर ये आप नहीं समझेंगे आप सोल्यूशन कर भी नहीं सकेंगे। तो ये जो 4 इवेंट्स को समझना ज़रूरी है, 4 इवेंट, एंड इनका इम्पैक्ट क्या है, एंड सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है सोसाइटी। रिमेंबर, नेशंस डोंट डाई, दे कमिट सुसाइड्स। ये हमेशा याद रखें आप। जो रोमन एम्पायर का आप देख लें, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मार्कस ऑरेलियस था, उसके बाद कॉमोडस आया, उसने बेरागर किया, द बारबेरियंस एट द गेट था, जब वीकनेस अंदर से हुई, सीजर का था, यू रिमेंबर, फ्रॉम बीइंग द रोमन रिपब्लिक इट बिकेम द रोमन एम्पायर, राइट? बिकॉज वो जो रिपब्लिक का सिस्टम था उन्होंने ख़त्म किया, एम्परर बनना शुरू हो गया था, ऑक्टेवियस केम, सो सम गुड एम्परर्स कम, नीरो केम, सो उसमें ऊपर नीचे। ग्रीक्स का आप देख लें, ऊपर गई, अगेन दी वॉर्स बिटवीन ग्रीक्स एंड ऑल दीज अदर आइलैंड नेशन, इवेंचुअली क्या हुआ, ऊपर से हुआ है द मैकेडोनियंस, अलेक्जेंडर द ग्रेट केम, उसने सबको बोला तुम्हारी सबकी छुट्टी है, एंड द मैकेडोनियंस जस्ट टुक ओवर, राइट? सो इंटरनल जब आप ये कैंसर जब आप करते हैं, तब फिर इवेंचुअली एक्सटर्नल फोर्सेस कम, मुगल्स के टाइम का, हाउ डिड इट कोलैप्स? इंटरनली आपका खोखला हो गया, तो उसके बाद ही ब्रिटिश आए हैं, राइट? और दी ओपियम वॉर्स ऑफ द चाइनीज़ 200 साल तक खोखला होना शुरू हो गया था, इवेंचुअली देन द ब्रिटिश केम एंड उन्होंने उसको ओपियम बेचा, करा एंड उसको ख़त्म किया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एवरीवन आउटसाइड, वी नीड इंट्रोस्पेक्शन। हमें समझे कि हम अपना, वीव कमिटेड सुसाइड आवरसेल्व्स, ओके? ये एक रियलाइजेशन अगर आ जाए, we can find solutions. So what would be a way out of this suicide right now, immediate, let's say next 6 to 12 months? There is no 6 to 12 month solution. There is no such thing. आपने 40 साल आपने बेरा घर किया है मुल्क का, आप समझते हैं कि 1 साल में सही हो जाएगा? Absolutely not. And I'm saying thank God for the IMF. God bless the IMF कि जिन्होंने ये जो फेक हमारा जो था, डंडे मार मार के हमें रियलिटी बताई है यूँ, so we become better Muslims. God bless the IMF.
तो इसमें वरना तो हम अपनी हम सीधे हरकतों नहीं से होते। एंड झूठ बोलना, राइट? आई मीन एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, पीपीपी, नवाज शरीफ, पीटीआई, इमरान खान के, मैं शौकत खानम का मॉडल लाऊंगा और बुजदार आके बिठा दिया। आई मीन द काइंड ऑफ मलिक रियाज की वो $190 million का जो उसको फ्री पास दिया, एंड देन सो मेनी करप्शंस हैपेंड, बुजदार का रैम्पेंट करप्शंस हैपेंड, राइट? एंड स्टिल कि हम रियासत मदीना बना रहे। आई मीन एंड वी हैव टू बी बंच ऑफ इडियट्स to be believing that, right? The only thing is कि we need to, हम पहले हमें अंदर से, like Rumi said, right? First I was clever, I wanted to change the world, now I'm wise, I'm changing myself. पहले हमें अपने अंदर से देखो कि हम अपनी हरकतें क्या कर रहे हैं. What are you doing in your daily life? What am I doing in my life? Forget about इस्लामाबाद. इधर से तो यार आप पहले शुरू करो. हम कहते नहीं, हम अपना 2 नंबरी काम जारी रखेंगे. आप देखो स्मगलिंग, यार आई मीन इट्स रिटिक, कौन से मुल्क में होती है इस किस्म की? आटा और चीनी ये डबल प्राइस होगी, ब्लेटेंटली जा रहा है. एक हो ना चोरी छुपे, ब्लेटेंट, वहाँ से ऑयल डीजल सब आ रहा है. ये भाई, ये आप डिफेंस फेज 8 के देख लें, सब जगह प्रॉपर्टीज़ में काले सारे पैसे चल रहे हैं, रैम्पेंट करप्शन चल रही है. आप सुपरमार्केट में जाए, सारा का सारा स्मगल्ड है. भाई ये कहाँ से आ रहा है? चांद से तो नहीं, हेलीकॉप्टर से तो नहीं गिर रहा है ना भाई? कहाँ से आ रही है भाई? इज देयर एनीवन आस्किंग? अफगान ट्रांजिट ट्रेड, वो जब तालिबान का टाइम था, 3.25 लाख VCR और टेलीविजन जाते थे अफगानिस्तान में ना. वो उस टाइम पे, दिस बिफोर 9/11, राइट? वी नो कि वो बैंड थे, तो कहाँ जा रहे थे, राइट? सारा इधर आ रहा था. तो हम कराची में ये वाटर हाइड्रेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ वाटर हाइड्रेंट्स खुल्लम खुला चल रहा है. इफ़ वी आर नॉट विलिंग टू, या आप टैक्स का आप देख ले, टैक्स टू GDP देख ले, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज देख ले. कपड़ा मार्केट में आपको बताऊं कि आई यूज्ड टू रन टेक्सटाइल मिल. वहाँ ये होता था कि आप जाएं तो वो मैं बैंक में नहीं रखूँगा, सूद हराम है. अच्छा भाई चलो, अच्छा इंश्योरेंस भी हम नहीं करते हैं क्योंकि वो भी हराम है. अच्छा चलो ठीक है, हराम है तो आयल से कि ठीक है, आप टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं. आप कपड़ा है, आप 3 महीने का आप उधार पे देंगे, एटलीस्ट से 10% प्रीमियम. तो वही मैं कहता कि यार 2 नंबरी करना, टैक्स की चोरियां करना, ये दुकानें आपने करोड़ों रुपए की ब्लैक के पैसे का, वो सही है, लेकिन बैंक में रखोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा. दिस आर सोशल हिपोक्रेसीज, राइट? सो इफ यू डू नॉट शेड दीज सोशल हिपोक्रेसीज, एंड इसमें हमें वी हैव टू लुक इनटू आवर ओन सेल्व्स. फॉरगेट अबाउट इस्लामाबाद के कोई हेलीकॉप्टर से आएगा, खान आ रहा है या जरदारी आ रहा है या नवाज शरीफ आ रहा है. नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस. एंड यू नो व्हाट, I'm critical of political leaders, but I work with them also, right? So we need to, कहते हैं ना, light the candle instead of cursing the darkness, right? So जहाँ आपको opportunity मिलेंगी to do some meaningful work, you do it. So all my social work I do with governments, public-private partnerships, I do with corporate sectors, I put my own thing. So जहाँ भी opportunity मिलेगी, I don't want to be judged. I'll be critical of the establishment also. लेकिन I'll be supportive also. जो आप अच्छा काम करेंगे, we should be supportive. जहाँ ये जो blind following होती है ना, कि वो अल्ताफ भाई या वो जरदारी या मियाँ चंद या हमारा खान साहब आ गया टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड. नॉनसेंस, ब्लाइंड फॉलोइंग आप ख़त्म करें. आप ऑब्जेक्टिविटी आप लाएं, एंड एथिक्स लाएं, आप मेरिटोक्रेसी लाएं सोसाइटी में. बट इसमें एक चीज़ मैं कहता हूँ, देयर इज वन चैलेंज टू व्हाट यू आर सेइंग. ओके, यू सी, you've said ये जो changes लाने हैं, these are not short term, near term, ये long term changes, these are 5-10 years societal changes, right? मतलब you said कि 79 में, let's say the activities of the 70s led to the 80s, 90s and 2000s, right? मतलब यानी कि वो जो 10 साल का पीरियड था ने 30 साल डिफाइन किया है. एब्सोल्युटली 40 साल डिफाइन किया, अब तक डिफाइन कर रहा है. अब let's say there is a segment of this population that is 35-40 years old who are at the halfway point, right? ज़िंदगी उन्होंने आधी गुजार ली, अब गुजर गई जैसे गुजर गई. आगे मेरा डिसीजन है, should I live here knowing कि by the time ये सीधा होने लगेगा, मैं तो it will be my time to go upstairs or downstairs depending on how I've lived. तो मेरी लाइफ टाइम में तो ये सीधा नहीं हो रहा है. ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि अगर 10 साल की सफाई और ये बुरे फैसलों ने 30 साल डिफाइन किया, तो आज अगर आप 40 साल के हैं तो 70 पे तो आप बैठे हैं बिफोर यू सी एनी चेंज. व्हाई वुड आई स्टे हियर? ओके, सो यू नो व्हाई? बिकॉज coming back to the original conversation, your purpose in life. If you ask me, I'm doubling down.
मैंने तो कब्र भी मेरी यहीं होनी है. आई डोंट गिव अ शिट अबाउट भागना. Why should it? If I was in my 20s, again, यहाँ मैं आज बड़ा बोल इसीलिए because I can afford to do that. If I was in my 20, मैं देख रहा हूँ मुझे भी नौकरी करनी है, कुछ सेविंग करनी है, कुछ बीवी बच्चे भी करने हैं, एजुकेशन मिलेगी. Maybe I don't have a choice. Maybe I look at going to Dubai or to America or somewhere because I have to survive. जिसका वो है तो they have to go, they go. तो जिसको survival is a priority, उसका तो फैसला बन चुका है. लेकिन कोई वो भी है कहता है, you know what, I have in my NGOs, जो they have option to go abroad, but they say no, we're going to double down and हम यहाँ काम कर रहे हैं, right? So we have a lot of this. So again, it's about fulfilling a purpose in life. It's about taking the bullet on the battlefront. Knowing कि किसी को गोली लगने में किसी को शौक नहीं है, लेकिन you go, you fight it out, right? And you do it. Your purpose in life is different. My purpose in life is different. His is different. Everybody is different, and that's fine. It's okay. So लेकिन अब ये है ना कि दुबई चलो, पहले ट्रेंड होता था बाहर भागो. No, that's being just scared, right? I support people going out. वो कहते हैं ना, brain drain is better than brain in the drain. Okay, so I'd rather have them go out, make a productive, maybe they come back, right? Rather than just यहीं third. I mean, ये generation तो lost है. Forget about it. हम इतना अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में करें, contribute with the hope कि फ्यूचर में जाके मुल्क कुछ सुधरेगा. This is the reality. The hopeful part is as follows. Number one, हमारे अंदर जरासीम है to become a very, very successful, वाइब्रेंट नेशन. ओके, हम जो पोटेंशियल की बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कब्रिस्तान भरा हुआ है बहुत लोगों से जो उसके बाद बहुत पोटेंशियल था. जब तक आप पोटेंशियल को आप कन्वर्ट नहीं करेंगे टू कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, आपके कोई नहीं आएंगे, राइट? सो पोटेंशियल को आपको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा. पोटेंशियल है हमारे अंदर, नो डाउट, राइट? एंड ऑल्सो जो हमें अचीव करना है, वी डोंट वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड. फॉरगेट अबाउट इट. मैं कहता हूँ हम सिर्फ एवरेज पर आ जाएं, ग्लोबल एवरेज, यहाँ से यहाँ आ जाए. We are good enough. We don't want to go there. Agriculture yield आप एवरेज की कर दें, आप अपनी प्रोडक्टिविटी आप एवरेज कर दें, आप अपना आप अपनी जीडीपी सारी चीजें एवरेज करें यार. आपकी एजुकेशन लेवल को आप एवरेज कर दें, आप यूनिवर्सिटी के आप एजुकेशन आप एवरेज कर दें. एंड एवरेज करना मुश्किल नहीं है. इट्स अबाउट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. आखान हॉस्पिटल का, आई एम पार्ट ऑफ इट. You know how much the R&D budget is? Take a guess. $150 million. Wow. Yes. Okay. कटिंग एज रिसर्च करें. AKU के जो ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं, डू यू नो द टॉप इन द वर्ल्ड पे जाते हैं. द टॉप स्टूडेंट्स जो एंट्री होती है, अमेरिका में एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ बैठते हैं, दे स्कोर द हाइस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, सो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग आप करें. इस्टेब्लिशमेंट्स को भी मैं हमेशा कहता हूँ जनरल साहब कि भी ठीक है, आर्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, राइट, बट डोंट मेक इट सो डोमिनेंट कि वो कहते हैं ना, ग्रास डजंट ग्रो अंडर अ बनियन ट्री. आप दूसरी भी आप इंस्टीट्यूशंस को आपने नर्चर करना है, उनको भी आपने स्पेस देनी है ताकि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें. नेशंस डेवलप ऑन इंस्टीट्यूशंस. पहले PIA थी, वाइब्रेंट. आई मीन जैकलीन ओनेसिस ट्रैवलिंग, ये जो था ना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, ये उसने अपना रिमार्क्स में लिखा था, विच वी कॉपीड फ्रॉम देयर. शी टुक अ फ्लाइट. Yes, 64 I think, 63. She took a flight from America to like Europe. आई थी, PIA चूज की थी. Imagine an ex first lady of this thing choosing PIA to come and meet Onassis. Okay, so PIA में है. हमारा वो स्टेटस था. हमारे अंदर जरासीम है. If we stop shooting ourselves in the foot. And if we find our meaning and purpose. It's there, it's staring us at the face if we stop being idiots. सही बात है. Thank you so much. I really enjoyed this conversation. It's unlike any other I've had. I think the width and the depth of this requires there a follow-up. Requires there to be a follow-up. I would love to talk about astronomy. And I haven't touched. I was just going to say, I haven't touched on astronomy because I do want to speak to someone who can walk from the Big Bang theory all the way to present time. Not only that, but I think quantum. वो तो मेरे सर से गुजर. No. By the way, if it does not blow your mind, then it's not quantum. It जितनी आपकी assumptions है ना, you have to throw it out of the window. That sounds like a very Gen Z word. आजकल सब लोग meta करते हैं ना. That's so meta. I'm going to start throwing this word. That's so quantum.
But again, thank you for taking the time Sure. out. Would love to have you back on and continue this discussion. I think some of the Inshallah. points you made are extremely valuable. Or hopefully लोग देख के समझें कि they find meaning and purpose. And I think that is the way to live. Obviously, sustenance or If I may yeah. just conclude on something, Alexander the Great came over here, right? And it's one of the stories, whether it's real or not, but Greeks में है कि he came across one of these Jain naked priest होते हैं, right? वो जंगल में वो बैठा तो वो अपना meditation कर रहा था. They were called gymnosophists, कहते हैं ग्रीक में उनको. तो उस वक्त कहानी ये थी कि Alexander came after conquering the whole Persia and everything, comes into river Indus, and he comes across this naked priest sitting, right? So Alexander, he says, what are you doing? He's saying, I'm contemplating the universe, right? So then he says, so Alexander, he says, what a waste of a life. So the priest asks Alexander, he said, what are you doing? He says, I'm conquering the whole world. And he says, what a waste of a life, right? So it's about two opposing perspectives, and we need to find that balance somewhere in between. Well said. Wow, that I haven't heard that one before, but that's actually very thought provoking, especially in this generation and this time that we're in. So definitely have to have you back. And we need to talk about some of the philanthropy work you've done. Stay tuned, guys. Stay tuned for more episodes of DigiTales. Subscribe if you have not subscribed already. कमेंट ज़रूर छोड़िए. आपके कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जो कमेंट्स आप छोड़ते हैं उस पर फीडबैक लेके इस कंटेंट को मज़ीद बेहतर करें.